This conference will now be recorded. Ilm is the light. Hidayat is the light. And the light is ilm and hidayat. You may be thinking now, how can ilm be light? हकीकत में इल्म ही नूर है, हिदायत ही नूर है और नूर ही इल्म और हिदायत है। आप अलहदा अलहदा फरामीन के अंदर, अलहदा अलहदा कुरान के रेफरेंस के अंदर, अलहदा अलहदा गिनानों के अंदर कभी अल्फाज इल्म का इस्तेमाल हुआ, कभी हिदायत का और कभी नूर का। To us, Noor only can be seen with eyes. Matter of fact, the Noor can be entered from your ears in the form of ilm, फरमान, इसमें आजम। जब इमाम आपको हिदायत करते हैं, फरमान करते हैं, उस हिदायत और फरमान के अंदर, when imam is guiding you, giving you the farman, within the farman is ilm and his noor. That enlightens your heart and your mind. So these three names are three different names of the same fact. ये तीनों चीजें इल्म, हिदायत और नूर एक ही हकीकत के तीन अलहदा अलहदा नाम या रुख है। कहीं पर हमने इसको इल्म कहा, कहीं पर हमने उसको हिदायत कहा, कहीं पर हमने उसको नूर कहा। नूर इल्म, नूर हिदायत, नूर इमाम। दोबारा से, नूर इल्म, the light of the knowledge, नूर हिदायत, the light of the guidance, नूर imam, the light of the imam. Those are one and the same. But to understand, to make someone understand, to learn, to teach, Peers and Dice have used three different words to make us understand of the same fact. हमारे पीरों और दाइयों ने तीन अलहदा अलहदा नाम फरमाए हैं हमें समझाने के लिए, हमें टीच करने के लिए। जहां पर उनको इल्म, जहां पर उनको हिदायत, जहां पर उनको नूर का अल्फाज यूज करना था, उन्होंने वो प्रॉपर प्लेस पर प्रॉपर वोकैबुलरी के साथ हमको एक बात समझाई। So I wanted to take few minutes and talk about that. Let's come to our subject. And most of you were with us last Sunday, and you remember why this subject had come in the front in our mind and why we started to talk about Ilm, Hidayat and Noor. Because you have noticed and I have noticed there are few of our good friends,
few of our Jamati brother and sisters, due to the lack of ilm, the lack of hidayat, and lack of light, the nur, they may think or come to an understanding that our tariqah is just like any other tariqah. And sometimes they think that our tariqah is not the right tariqah of Islam. And therefore, very unfortunately, very sadly, they leave the Imam and our tariqah. And it is only and only due to the lack of knowledge, lack of guidance, and lack of enlightenment. We had talked about a couple of ayat from the Quran. Why do they do that? And it is on your left side of your screen. I have displayed it from the previous week. But before we go into the further ayat and talk about this, I want to talk about the human nature. इससे पहले कि हम पिछले कुरानी रेफरेंसेस को और आज के नए कुरानी रेफरेंसेस को देखें, मैं आपके सामने इंसान की जो आदत है उसके बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। मौला ने अपने कुछ फरामीन के अंदर, स्पेशली 1968 के अंदर कराची एंड मुंबई दोनों मकामात पर have said that if you want to learn your religion, you must learn from those books which are written for our tariqah in their original language. यानी कि ओरिजिनल सोर्स से हम अपने तरीके को सीख सकते हैं. Because we do not read, or we have a hard time reading, or sometimes even finding the original book in the original language, in the original form and vocabulary, even when those are translated, the lack of interest in reading book and books are there. But then Mullah have also guided us, that is to learn from the history. How do we learn from the history? That's what we're going to talk about today. How do we learn from the history? Let's look at and see what happened at the time of Adam. Gee, I want to take you all the way back to Adam. Let's see if we can learn from the history. क्या हुआ आदम के जमाने में और हम क्या सीख सकते हैं आदम के किस्से से? जब खुदावंद ताला ने आदम के अंदर अपनी रूह फूंक दी, remember we just talked about the nur can enter in a moment through eyes, ears, and there are 16 other way Imam Jafar Sadiq Salawatullah alayhi have given us that nur can enter into our body. 16 different dimensions. But let's talk about the ears. Allah blow his nur into Adam. कहां से उसके अंदर रूह फूकी होगी? कान के अंदर से. किस तरह से रूह फूकी होगी? फरमान, अमर, इसमें आजम देते हुए.
और जब आदम के अंदर रूह फूंकी गई और खुदावन ताला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, after he blew his nur into Adam, Allah commanded, ordered angels to prostrate to Adam. What lesson can we learn from this event? दो लेसन मिनिमम हमारे सामने है, 2 लेसन मिनिमम, कम से कम 2 लेसन तो है हमारे सामने। एक कि इमाम नूर अपने फरमान, अपने अमर और अपने इसमें आजम के जरिए से मोमिन के अंदर फूंकता है। इंशाल्लाह जब हम उस मकाम पर पहुंचेंगे, इंशाल्लाह ताला, when we will reach that status as a momin Adam did, then the Imam of the time, Imam Zaman, will bless us with that Amr and that Nur, that Isme Azam. This was the first lesson. Second, because the Nur was in a human body, Adam, then the Sajda was ordained, commanded. चूंकि नूर आदम एक मोमिन, एक इंसान के अंदर आया, तब, उससे पहले नहीं, तब हुक्म हुआ कि तुम सजदे में गिर पड़ो। चूंकि फरमान है खुदावंद ताला का कि इंसान के अंदर अगर नूर है तो आप उसको सजदा करें और वो जायज लायक है। If the nur is in the human body, in this event, in this example, in the Adam, then you must prostrate to the human, wherever that nur is. In our case, in today's case, the Noor Khudawandi, Noor Maulana Shah Karim Al-Saini Hazar Imam. The command is simple, and the third lesson in this event is, remember that we are learning from the history. Third lesson in this is that whoever did not prostrate to Adam, whoever refused to prostrate to the Adam, was called Shaitan, Iblis, evil, devil. जिस किसी ने खुदावंदी फरमान के मुताबिक आदम को सजदा करने से इनकार किया, उसका नाम शैतान पड़ा। और जिस किसी ने आदम को सजदा किया, उसका नाम फरिश्ते पड़ा। आज जो खुदावंदी नूर हमारे सामने हाजिर और मौजूद है, और जो उसको सजदा करते हैं, इमामी के फरमान के मुताबिक आप फरिश्ते हैं। इमाम ने दूसरी तरफ नहीं फरमाया, लेकिन हम समझ गए, हमने ये इवेंट से, हिस्ट्री से सीखा कि जो कोई इनकार करता है, जो कोई इनकार करता है, उसका नाम क्या होगा। We don't need to say it, we don't need to worry about it. आप समझ गए, those
who have prostrate and those who are following this farman, that when and wherever you find the nur in the human body, that is the Adam, that is the Adam as Zaman, that is the Imam as Zaman, that is the Imam Mubin, the manifested Hazir wa Mawjud Imam. So that was a lesson from the Adam, learned from the history. Then came the time of Hazrat Nuh alayhi salam. The second lesson here in the Noah alayhi salam, whoever followed the prophet, the nur of the zamana, and whoever included themselves in the kashti nijat, जिस किसी ने जमाने के हादी को फॉलो किया और जो भी उसकी कश्ती निजात में बैठ गया, वो तमाम के तमाम पार उतरेंगे. Those who have followed the guidance of the guide of the time, and in this event, in the history, we are talking about Hazrat Noah alayhi salam. In our time, in present time, the Noah of the time, we call him Shah Karim al-Hussaini Hazir Imam, the guide, the Sahibe Zaman. Whoever follows his farman and whoever include himself in the Kashti and Nijat will receive the salvation and they will receive the Nijat. You see how we are learning from the history, and the big lesson is yet to come. अभी एक और बड़ा लेसन आ रहा है आगे. Let's come to event of Hazrat Ibrahim. Khudawand Ta'ala says, you stand and pray in the place of Ibrahim, जहां पर जमाने का हादी खड़ा हो जाए, वहां पर तुम खड़े रहकर खुदावंद ताला की इबादत करना. क्या सीखा हमने इस हिस्ट्री से कि जहां पर इब्राहिम ऑफ आवर टाइम, हमारे जमाने का इमाम खड़ा हो जाए, जिस तरीके के अंदर वो खड़ा हो, जहां पर वो हाजिर और मौजूद हो, वहां पर खड़े रहकर तुम अपनी इबादत करना, और कहीं नहीं, और कहीं नहीं. ऐसा नहीं फरमाया कि इब्राहिम यहाँ खड़ा है तो आप वहां खड़े रह के इबादत करना. नहीं, जिस मकाम पर जमाने का हादी खड़ा हो, वो ही मकाम इबादत के लिए जायज है, और इसी मकाम पर खड़े रहने का हुक्म है. आपने देखा कितना आसान एंड ब्यूटीफुल our teaching is of the Ismaili Tariqa. Our Ismaili Tariqa teaching is not hard. Only if we follow the guidance, the farman of the Imam and understand, and then as Imam's farman, do the personal search and find these references, find those books, find the ayat in the Quran. It will guide us. It is Imam's task in this world to guide us.
इमाम अस खुद फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया में वो तकलीफ लेकर आपकी निजात के लिए आया हूं। आप सोचें कि कितना आसान है अगर अगर हम इल्म से उसकी हिदायत को समझते हैं तो उसका नूर हासिल कर सकते हैं, वो इनलाइटमेंट हासिल कर सकते हैं जो इमाम हमें देना चाहता है। आए थोड़ा आगे चलते हैं हिस्ट्री के अंदर ही। फिर आया जमाना हजरत मूसा का। हजरत मूसा ने हमें किस तरह से किस मकाम पर हिदायत और नूर है उसके बारे में बताया। कहा कि आप अपने बैतुल ख्याल के अंदर, अपने आलम शख्सी के अंदर बुलंद मकाम पर जाकर इबादत करो, कोहे तूर पर। ये किसी पहाड़ की बात नहीं, ये यहाँ की बात है कि बुलंद मकाम पर जाकर, यानी कि दुनिया जो निचला मकाम है उसको छोड़कर बैतुल ख्याल के अंदर बुलंद मकाम पर। बैतुल ख्याल, बैतुल ख्याल के दो मायने हैं, एक बातीन की तरफ और एक बुलंदी की तरफ। और ये हजरत मूसा के इवेंट से हमको सीखने मिला that how he had taught us and shown us that go to the higher place, not a physical mountain, but the Kohe Tur within you. Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, may our soul be sacrificed to that Imam, says, the Noor is in your forehead. This is the Bhavan Gufa. He is inviting you to Kohe Tur. The Mount of Sinan is right here at the higher level. That's what we learned from that event, from the history. And he even have shown us the journey of the soul. किस तरह से बातीन के अंदर एक सफर है, और वो सफर हजरत खिजर जमान, इमाम जमान नूर मौलाना शाह करीम नियाज़ इमाम के साथ चलता है। अगर आप चाहते हैं रूहानी सफर करना तो जाएं जमाने के खिजर इमाम जमान के साथ ये सफर करें। आए फिर हजरत ईसा के जमाने में। याद रखें अभी एक बड़ा लेसन बाकी है। I haven't given the lesson yet. We are just learning from the history. अभी तक हमने लेसन नहीं पढ़ा है, हम खाली हिस्ट्री को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या उसमें सीखने का था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हमें क्या सीखने मिला कि वो पैदाइशी पैगंबर थे और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद फरमाई अपने क्रिडल से, अपने झूले के अंदर से ही उन्होंने मिरेकल्स और दावत का आगाज कर दिया। और सब्र का एक बहुत बड़ा लेसन वो हमें दे गए, कुर्बानी का एक बहुत बड़ा लेसन हमें दे गए। He gave us the lesson of the patience and lesson of sacrificing yourself for others. He taught us those two lessons.
Then came the time of Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and he showed us how ibadat is important by going to Gare Hira. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया कि इबादत की कितनी बड़ी अहमियत है। वो बहुत अर्ली ऑन से इबादत करने के लिए गारे हीरा में जाया करते थे। इबादत की अहमियत हमें सिखाई, हमें बताया कि जब आपके ऊपर नवाजिश होगी तो किस तरह से जिब्राइल आपके लिए काम करेगा, किस तरह से इमाम ज़मान आपकी तरफ, आपके अंदर से, आपके बातीन में से आपकी तरफ हिदायत भेजेगा। वो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया और हमारे लिए दो बहुत ही भारी और इम्पोर्टेंट थिंग्स, चीजें छोड़ गए। वन वॉज कुरान द बुक, सेकंड वॉज इमाम द नूर द गाइड। He left us with the two things and said what? क्या फरमाया कि जिस किसी ने इन दोनों चीजों को पकड़ के रखा वो कभी भी पारा पारा नहीं होगे, वो कभी भी हकीकी इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे, वो हमेशा मेरी हिदायत के मुताबिक रहेंगे। और क्या हिदायत थी? कुरान और इतरत, इमाम को पकड़ के रखना, मजबूती से पकड़ के रखना। अगेन अगर हम सोचें कि क्या वजह हुई हमारे ये सब्जेक्ट की, कि कुछ लोगों ने इमाम के दामन को छोड़ा है। आज यहां से हमारे ये सब्जेक्ट शुरू हुआ था। क्या वजह हुई उन्होंने इमाम के दामन को छोड़ा? क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री से अपना लेसन नहीं पढ़ा, हदीस से अपना लेसन नहीं पढ़ा, कुरान से अपना लेसन नहीं पढ़ा, इमाम के फरमान से अपना लेसन नहीं पढ़ा, गिनानों से अपना लेसन नहीं पढ़ा, अपने माँ बाप से अपना लेसन नहीं पढ़ा। That was the reason. खुदावंद ताला सूरे असर में फरमाते हैं कि ये लोग बहुत ही खसारे में हैं। इन सूरे अल असर, सूरा नंबर 103, अल्लाह said, I swear on the time, जमाने की कसम, surely human are in grave loss. ये किन के लिए फरमाया है? ये कौन से इंसान के लिए खुदावंद ताला फरमा रहा है? ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इमाम के दामन को छोड़ा है, उनके लिए खुदावंद ताला फरमाता है कि ये लोग एक बहुत बड़े खसारे में हैं। A great grave loss. मगर except those who have faith, लोग बहुत बड़े खसारे में हैं जिन्होंने इमाम के दामन को छोड़ा है, मगर वो लोग जिनका ईमान मजबूत है और जिनके अमाल अच्छे हैं, वो लोग हर हमेशा एक दूसरे को हकीकी बात बताते हैं। They tell each other the truth. और हमेशा उनको अच्छे रास्ते की तरफ एडवाइस करते हैं। इसके बरअक्स आपने देखा कि कुछ लोग इमाम के दामन को छोड़ के इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने गलत लोगों की, बेईमान लोगों की, बुरे लोगों की बातों को सुनकर इमाम को छोड़ दिया।
और दूसरी तरफ हम है कि जो ईमान वालों के लिए, अच्छे काम करने वालों के लिए हम आपस में मिलकर एक दूसरे को इमाम की बातें बताते हैं और सुनाते हैं, खुद भी सीखते हैं, दूसरों को भी सिखाते हैं। ये फरमान, ये आयत बहुत ही वाज़ेह है। सिर्फ 3 आयतें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, कि इंसान बहुत बड़े खसारे में है, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो अच्छे काम करते हैं और जो एक दूसरे को अच्छे काम की तरफ नसीहत करते हैं, इमाम की तरफ रागिब करते हैं, कुरान की तरफ रागिब करते हैं, फरमान की तरफ रागिब करते हैं, गिनान की तरफ रागिब करते हैं। और उसके बरक्स वो लोग हैं जो आपको और उन लोगों को अनफॉर्चुनेटली, सैडली, इमाम से और कुरान से दूर ले जाते हैं। Let's come to the lesson. So what was the lesson? We talked about the history. We haven't talked about the lesson yet. आपने तमाम किस्से के अंदर एक बात देखी, वो क्या थी? कि हर जमाने में आदम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज के जमाने तक एक बात आपने नोटिस की कि हर जमाने में कुछ लोग हादी को फॉलो करते हैं। What did you learn from this journey? That there are always some people who follow the Imam, the guide of the time. May it be the time of the Prophet, may it be the time of the Imam. चाहे वो रसूलों का जमाना हो, चाहे वो इमामों का जमाना हो, वो हमेशा हादी जमान के दामन को पकड़कर उसको फॉलो करते हैं। और हर जमाने में आपने और क्या देखा कि कुछ लोग ऐसे हो गए जो खुदा के हुक्म को नहीं मानेंगे, हादी जमान को नहीं फॉलो करेंगे, वो कभी भी अपने जमाने के हादी को नहीं पहचानते हैं और वो उनको छोड़ देते हैं। उसकी क्या वजह होती है कि वो हादी जमान को छोड़ते हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ह्यूमन नेचर है, एक इंसान की एक आदत है कि वो माजी में रहना पसंद करता है, वो माजी में रहना पसंद करता है। क्यों? कि फ्यूचर जो है वो हम नहीं जानते हैं और हम डरते हैं फ्यूचर से। करंट जमाने में भी हम डरते डरते रहते हैं, हम माजी में रहना पसंद करते हैं। माजी के लोग बहुत अच्छे हैं, माजी में ये हुआ, माजी में ये हुआ, माजी में मोमिनीन थे, माजी में लोग अच्छे थे। हमने कब हमने ये कहा कि हमारा जमाना सबसे बेहतरीन जमाना है? अब किसी हिंदू को पूछे कि कौन सा जमाना अच्छा है, वो कहेगा जब कृष्णा मौजूद था, माजी की तरफ इशारा करेंगे। आप किसी यहूदी को पूछे कि कौन सा जमाना अच्छा था, दे विल से व्हेन मोसेस वाज प्रेजेंट। आप किसी क्रिश्चियन से पूछे कौन सा जमाना अच्छा था, वो कहेगा जब जीसस वाज प्रेजेंट। आप किसी नॉन इस्माइली मुस्लिम से पूछे कि मेरे भाई कौन सा जमाना अच्छा था, वो कहेगा आपको when मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was present, that was the best time. आप किसी इस्माइली से पूछे, आप अपने आप से पूछे, आप मेरे से पूछे कि what is the best time
Ismaili should and will answer कि ये जमाना सबसे अच्छा है। एंड जब आप उसको पूछेंगे भाई क्यों, वो कहेगा क्योंकि मेरा मौला मेरे साथ है, मेरा इमाम मेरे साथ है। My imam is with me, so today is the best time. Today is the best time because my imam is present, and all the time when a human, a moment is with the imam, may it be the time of Adam, may it be the time of Khatam, may it be the time of Shah Kareem. All time is good for the Mu'mineen because Imam is Hazir and Mawjood and present and guiding us. Today's time is the best time. That is the lesson. आप माजी में ना रहें, आप ज़माने के साथ रहें, इमाम के साथ रहें, और इमाम हमें गाइड करता है फ्यूचर की तरफ. So do not be afraid of future. If you are with the imam, your future is bright. If you are believing in imam today, your present is safe. And our past was always good if and when we were with imam. The lesson is that हर हमेशा हर जमाने में लोगों ने माजी की तरफ इशारा किया. जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए तो कहा नहीं, हमारे पास आदम का इल्म काफी है, हमें तेरा इल्म नहीं चाहिए. जब हजरत इब्राहिम का जमाना आया तो कहने लगे हजरत आदम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इल्म काफी है, हमें आपका इल्म नहीं चाहिए. जब हजरत मूसा का जमाना आया तो कहने लगे हमारे बाप इब्राहिम का इल्म हमारे पास काफी है, हमें आपका इल्म नहीं चाहिए. जब ईसा का जमाना आया, जब मोहम्मद का जमाना आया तो कहने लगे नहीं, हमारे बाप इब्राहिम का इल्म, हमारे बाप आदम का इल्म हमारे लिए काफी है, हमें आपका इल्म नहीं चाहिए. आपका कुरान, आपका इल्म, आपका नूर, आपकी हिदायत नहीं चाहिए. ये कहते हुए अक्सर लोग पीछे रह गए. तो वो हमारे भाई बहन जो इमाम के दामन को छोड़ के जा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हमें जमाने के इमाम नहीं चाहिए, हम माजी में खुश है. हम 1400 साल पहले जो इल्म आया था उससे हम खुश हैं. वो भी यही कह रहे हैं, वही मिस्टेक कर रहे हैं जो हमारे उस जमाने के लोगों ने किया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का पैगाम कुरान और अली ज़मान को लेकर आए थे. तो लोगों ने यही कहा था कि हमें आपकी जरूरत नहीं है. आज भी ऐसे लोग मौजूद है और हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ. हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहरा रही है. आज अगर हम अक्लमंद है, if we are wise enough, we will learn from the history and will not repeat the mistake. अगर हम अक्लमंद है तो हम माजी से सीखेंगे और ये गलती कभी भी नहीं करेंगे जो माजी में लोगों ने की और आज वो लोग कर रहे हैं जो माजी की तरफ पास के अंदर जीते हैं. They are living in the past and they are making the same mistake as people of the past have made. Let's not do that. Let's come to our second reference of the Quran, and it's connected to our first reference of the Quran. Allah says in Surah Al-Hajj, Surah number 22, ayat number 3 and 4. Still, there are some who dispute about Allah
without knowledge. क्यों आप इमाम से झगड़ा करते हैं? क्यों आप इमाम के दामन को छोड़ के जाते हैं? एक वजह कि आपने इल्म नहीं लिया, इल्म को नहीं समझा, इल्म को नहीं फॉलो किया। एक ही वजह। आपको याद है हमारी ये सेशन सूरा नंबर 31 से सूरा सजदा से आगाज हुआ था, जहां पर खुदावंद ताला फरमाते हैं कि वो खुदा के बारे में झगड़ा करते हैं क्योंकि उनके पास ना तो इल्म है, ना तो हादी है, और ना ही नूर है। अगेन इन सूरह अल-हज, surah number 22, ayah number 3 and 4, Allah repeats the only reason someone will argue about the Imam, that would be due to the lack of knowledge. Ilm, ilm, ilm is the foundation, is the must, is the requirement. अशद जरूरी है कि हम इमाम के हकीकी इल्म को हासिल करें, सीखें, समझें और उसको फॉलो करें. Let's finish this ayat and then we will come to some of the question that we have received. Still, there are some who dispute about Allah without ilm and follow the rebellious shaitan. जो इमाम के बारे में आर्गुमेंट करता है और उसको छोड़ के जाता है, वो और किसी को नहीं फॉलो कर रहा है, वो शैतान को फॉलो कर रहा है. वो उन लोगों को फॉलो करता है जिन्होंने इमाम के दामन को छोड़कर, इमाम के फरमान को नया मानकर, खुदावंद ताला के हुक्म से नूरे जमान, नूरे खुदावंदी को सजदा नहीं किया, उसी का नाम शैतान है. और ये लोग उसको फॉलो करते हैं. ये मैं नहीं कहता हूं, ये आपके सामने कुरान की आयत मौजूद है. ये कुरान की आयत आपके सामने मौजूद है. So we need to pay attention to the hakiki ilm of the imam, and whenever possible give this knowledge, these Quranic references to those who are in trouble, who are disturbed, who are in doubt. Give them this, show them this path, give them these lectures, let them ask question. We are not afraid of the question. We can answer whatever doubts, question, queries they may have. But it is up to us to first learn and then give to our brother and sister who are confused for whatever reason. Inshallah ta'ala. So let me stop here. We do have a few questions. और अगर कामड़े साहब के पास कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह हम उसको भी कवर करेंगे. जी. Sir, I don't see any questions in the chat. Okay. So let me start with, we received 3 questions this morning from a friend. They are in the same line of question. So we will do one by one, but you will see they are in the same line of question. In one of our session on the journey of the soul, रूह का सफर का जो हमारा सेशन था, जो कामड़े साहब ने लास्ट वीक
इस ग्रुप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। इस दोस्त ने इसको बहुत अच्छी तरह से सुना और उसमें से 2-3 सवालात पूछे हैं। And the questions are, the very first question, we talked about the free will and how with our own free will, from the time when Imam asked, who would like to go to the earth? And he is asking, what about those souls who did not raise their hand and wish to come to this earth? What about them? He has a second part of that question. How would they receive Fanafi Imam status? So I'm going to address the second part first. मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये रूहें उस मकाम पर है कि जहां पर वो इमाम के साथ एक हैं. These souls have finished their journey from 6 to 5 to 4 to 3 to 2 to 1 at the level of 12. They are with and within the Imam. और उस मकाम पर यह सवाल हुआ था कि आप में से कौन अपनी फ्री विल से दुनिया में जाना चाहता है. तो आपका ये सवाल यहाँ पर नल एंड वॉइड हो जाता है कि वो लोग जो इस दुनिया में आने के लिए अपना हाथ ऊपर नहीं किया, उनका क्या होगा और वो कब फनाफी इमाम होंगे. तो वो तो ऑलरेडी फनाफी इमाम है, तब तो उनके पास फ्री विल आई. वरना तो जब हम मर जाते हैं और अगर खुदा ना खास्ता हम 6 से 5, 4 या 3 के नीचे हैं, तो ना तो हमारे पास नूर है और ना ही हमारे पास फ्रीडम है, ना ही हमारे पास फ्री विल है कि हम कहें और हाथ उठाएं कि we wanted to go back. That's not the case. You have no free will. You cannot request to come back. You have to finish your journey of the soul, and when you are at the level of 12 with Imam, and then only you will be able to show your will and your wish when Imam asks who would like to go down. फिर आप कह सकते हैं, या मौला, मैं आपके हुक्म से, आपके अमर से, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया में जाना चाहता हूं. So this was the first question. Second question is on the same line. My friend is asking about the higher level souls. For example, peers, dais and arifin. और इनका जो इशारा है वो सूरह यासीन आयत नंबर 68 की तरफ है कि जो बुजुर्ग रूहें होती है, those who are elevated soul, वो खुदावंद ताला के हुक्म से दुनिया के अंदर बार बार आती रहती है और उसको समझना बहुत ही आसान है. If you can imagine कि you are on level 6, आप घड़ी की तरफ देखें, आप 6 के ऊपर खड़े हुए हैं और आप एलिवेटेड सोल है. फॉर एग्जाम्पल पीर शम्स, पीर सदरुद्दीन, पीर हसन कबीरुद्दीन, पीर नासिर खुसरो, आरिफीन ज़मान. Then you go from 6 all the way to 12 within one lifetime. You are not going from 6 to 5 to 4 and waiting and 3 and waiting. No, that's not the case. You are going from 6 to 12 straight up. Those are the higher elevated souls. We call them prophets,
अंबिया, औलिया, इमामान, आरिफीन। ये 6 से सीधा 12 में जाते हैं. And they are the one who have the free will to come back as soon as they want to. जब भी वो चाहे वो आ सकते हैं. उनके पास इमाम ज़मान के अंदर होने की वजह से, because they are the elevated soul within the imam. So whenever imam gives the command, amar, farman, then they come back again and again to serve the imam zaman. Your third question is on the same line. What about the other prophets that comes to earth? Are they from the one single soul, or are they chosen and connected? If we look at the Quran again, Quran says, and there are few different references. In one place, you will find Allah says, we have chosen, we have selected Adam, Hazrat Noah alayhi salam, Ibrahim and his progeny, Imran and his progeny. And then Allah says that all the prophets are from one single soul. So the answer to your question is that all the prophets are predestined, chosen, selected by the Imam, and then there are sometimes, once in a while, Imam choose a mu'min. An example, Adam alayhi salam. And he takes this mu'min to the highest level of hudud-e-deen, at the level of natik. Some of you may know what hudud-e-deen is, hierarchy of religion. Adam was a mustajib. Mustajib, a mu'min who had accepted, who agreed to take the ilm of the Imam. Think about it. Who are you today? Adam had accepted to take the ilm of the Imam. He was a mu'min just like you. Tell me, what are you doing right now? Think about it. What are you doing right now? You are the one, that mu'min, who have said, I accept, I want to learn the ilm of the Imam. That's what Adam had said. And look where Imam had taken the Adam. If Imam can take the Adam to the highest level of hierarchy of the hudud-e-deen, can he not take you? Think about it. Ask yourself. Imam took Adam, a moment just like you and me, from the level of Mustajib to Mazun to Dai to Hujjat to Pir to the Bab to the Imam to the Asas, and made him a Natik, the Sahib-e-Zaman. He made him the Natik, the Sahib-e-Zaman. And he was a moment just like you and me. What did he do? What did Adam do to deserve that higher rank of the religion? You know what he did? What you are doing today. Trust. Imam can take you to the highest level. Trust him. When you accept the Hakiki ilm of the Imam,
then Imam can take you to the highest place. If you trust him and if you learn from the history, if you follow his farman, and if you take the Isme Azam and do your ibadat, Imam can and Imam will. अगर आप इमाम के हकीकी इल्म को हासिल करते हैं, इमाम के फरमान को मानते हैं, इसमें आजम के साथ इबादत करते हैं, तो याद रखें कि इमाम ने आदम को सबसे ऊपर के मकाम पर ले गए थे, वो आपको भी ले जा सकता है, यकीन करें. So this was the 3 questions which I received early in morning today. Thank you so much for your question. I hope you are online. I have no name, but I hope you are in line and listening to you answer to your question. Thank you so much for the question. Ji Kamriya Sahib. So we have received few questions. So one of the friends asking about that you talked about the sabr, and one of the Gnan reference she mentioned in the question that he says दुनिया में से sabr चले जाएगा, and she wants to know that how we can strengthen our sabr so it is not taken away. अच्छा, तो आप वो ज्ञान की बात करते हैं कि पहले दिन ये जाएगा, दूसरे दिन ये जाएगा, फिर कुरान चले जाएगा, फिर इल्म चले जाएगा, फिर सब्र चले जाएगा. रिमेंबर कि ऐसा नहीं है कि वो बाद में कभी होने वाला है. यही चीज आदम के जमाने में भी ट्रूथ थी. आपने देखा इब्लीस ने अपना सब्र और अपना ईमान गुमाया था. आपने देखा कि वो लोग जो कश्ती निजात में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं बैठे थे, उन्होंने भी अपना सब्र और ईमान गुमाया था. तो ये बात हर जमाने के अंदर दुरुस्त है कि जब जब हम इमाम के दामन को छोड़ते हैं, तब तब हम अपना सब्र खो देते हैं, हम अपना ईमान खो देते हैं. तो आपका दूसरा सवाल था, हाउ डू वी कीप आवर सब्र, आवर स्ट्रेंथ intact? Answer is simple: believe and follow the Imam. That's how you keep your patience and you keep your Iman, and in return you keep your Imam and his Nur. That's how you do it. Our tariqah is not hard. Our tariqah is very, very simple and easy to follow. Just a basic thing. Keep Imam, follow him, listen to him, and he will keep your sabr and your Imam intact. Ji. Sir, another question. Yeah, Ali Madad. The friend's asking why some souls choose to come back to earth with their free wills. Why? Okay, because Imam wishes. So remember the story again. If you have listened to the lecture on free will, it will tell you exactly how, when, where, and why soul choose to come to the earth. But because you have asked, let me answer this question. So let's take an event today so you will understand. आज मौला पापा आते हैं दरबार में और हुक्म फरमाते हैं कि मुझे 500 लोग चाहिए, मेरे पास एक काम है, मैं उनको भेजना चाहता हूं.
किसी काम के लिए, मुझे 500 फिदाई चाहिए, मुझे 500 मोमिन चाहिए, मुझे 500 लोग चाहिए. Tell me how many people will raise their hand? पूरी जमात अपना हाथ ऊपर कर देंगी. Correct? If you understand this, now let's imagine all the way back to the day that you were born. जिस दिन आप पैदा हुए थे ना, उस दिन की मैं बात कर रहा हूं कि जब इमाम ने अपने दरबारे रूहानी में पूछा, सवाल किया कि कौन है जो मेरी ख्वाहिश के मुताबिक दुनिया में जाना चाहता है. सब रूहों ने हाथ उठा दिया. So your answer to your question is because Imam, when he wish, moments follow. जब इमाम हुक्म फरमाते हैं तो रूहें उसको लब्बैक कहती है और अपना हाथ उठाती है. आप समझ गए कि क्यों हम आए हैं इस दुनिया में? इमाम की ख्वाहिश के मुताबिक हम आए हैं. जी. Sir, another question Mother, here. Is there anything above the rank of universal intellect? Our dais and peer have given us 12 hierarchy of religion. That is Mustajib, Mazun Medud, Mazun Mutallak, Dai Medud, Dai Mutallak, Hujjat, Hujjat Azam, Imam, Asas, Natik, Nafsekul, Aklekul. Those are the 12 hierarchy of the ranks. Hudud al-Din is given to us by our Dais and Hujjat. हमारे दाइयों और पीरों ने हमको ये सिखाया है. Now to answer your question, yes, the Noor Khudawandi, the Amr, the Kul is above all else, and we have heard this in Imam's Farman, right? He is above all else. That's the answer in this Farman for you. Ji. Yes, Sir. Yasmin, you can go ahead now. Ask your question. याली मदद अजीज सर. याली मदद. अजीज सर, मेरे को बहुत डिस्टर्ब होता है इबादत बंदगी के वक्त. ये जो हमारे ऊपर रहने आए हैं ना, वो लोग उसी वक्त अपना काम चालू करते हैं 2 बजे से. इबादत बंदगी में बहुत खलल पड़ता है और मैं क्या करूं मेरी समझ में नहीं आता. मैं तस्बीह लेके बैठी रहती हूँ, सारी तस्बीह पढ़ती हूँ मैं. जी. Jamatana is a really nice and quiet place to be. If you cannot do your ibadat at home due to the disturbance, अच्छा. I would suggest, recommend highly that you go to मैं Jamaatkhana. नहीं जा सकती हूँ जमात में. मैं भी बीमार हूँ, मेरे हस्बैंड भी बीमार है, हम दोनों अकेले हैं. Then, there is a couple of other ways you could do it. एक जो है, जो हम प्लेन के अंदर वो कानों के अंदर पहनते हैं, earbuds and ear muff. Try that. And then pray to Mola Baba, Ya Mola Baba, help me, and he will help you, inshallah. Your environment will get better and quieter, so you will be able to do your ibadat. Imam is here to help. He will help you. है. जी. बहुत बहुत शुक्रिया सर. बहुत मुश्किल में थी और बहुत मेरे को सब्र नहीं हो रहा था और मेरे को पूछना था कि मैं क्या करूँ ना. बहुत बहुत problem. शुक्रिया आपका. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कान में कुछ डाल लूं, मैं पढ़ूं, लेकिन फिर भी वो लोग इतने जोर जोर से वो हथौड़े मारते हैं कि मेरे दिमाग में चलते हैं वो. Inshallah, Mola is with you. He will help you. मैं क्या पढ़ूं? तस्बीह मुश्किल आसान की तस्बीह पढ़ूं ना?
Ji. Ask शुक्रिया, directly, बहुत Mola बहुत Papa. Mola Papa is your friend. You can just call him. Mola Papa, I need your help. You know, Mola Papa is your friend, right? बेशक। He's here to help you. You can just थैंक call on him, यू सर, talk to बहुत him. बहुत शुक्रिया। Talk to him. Yes. मौला आपको खिदमत का घर दे, सुखी सलामत आबाद रखे। मौला हमेशा आपको कामयाबी तरक्की दे। Ameen, ameen, ameen. बहुत बहुत शुक्रिया सर, याली मदद। Yali madad, yali madad. Any other questions? No, Yes, there are no more questions in the chat. Yes, go I ahead, think, Mr. Azim. there is a question in the chat, please. Can you have a look? Yes, I think Mr. Azim has sent a question. So he's asking, what can you say about how Maulana Hazar Imam has tackled the questions about having divinity when asked about various journalists? it would be hard for me or anyone to say how Imam's wisdomful words are used and uttered. इमाम की विजडम को जानना हम जैसे गरीबों के लिए बहुत मुश्किल है, पर I always get surprised and pleased with Imam's vocabulary. What a vocabulary! What a vocabulary! The way he used the words to answer those questions. You know, when he is asked in one place that, Ya Mola, this is in his previous Jama, Hazar Imam in his previous Jama, when he was asked that, Aga Khan, your murid calls you Allah. Are you Allah? And look at the vocabulary Imam used. I get so pleased and so surprised. Imam says, first he laughs. He laughs out loud and says, in India, even people believe the cows are Allah. Am I not better than a cow? आपने देखा इमाम के अल्फाजों को देखें आप, किस तरह से विजडमफुल आंसर होता है। ना मुला ने हाँ कहा, ना मुला ने ना कहा। He used his beautiful, wisdomful verbiage, words to answer. जब मौला को इस जमाने में एक जगह पर पूछा कि who will be your next imam, who will you choose? Imam said, it is only I who know and have the authority to pick the next imam of the time. Such a wisdomful words. When Imam was asked, can a woman, your daughter, be your next imam? And Imam says, categorically, no, she cannot be the imam. Do we know why Princess Zara or a woman cannot be imam? The reason for that is that if she is definitely the nur of the nur, the Imam Zaman, and she definitely qualified to be Imam. But because of the principle of Nurun ala Nur, the father Imam, the son Imam, the son Imam, the father Imam, then this principle, how would we apply it to Princess Zara? Because her son would not be Nurun ala Nur, meaning he or his father would not be the Imam. And therefore, a woman
A daughter cannot be imam because it is not about her, it is about the next imam. In one question, I remember in one of the sessions someone asked that, sometime for whatever reason, we are always guessing that imam this son, imam that son would be the imam. We should never do that. You know how in our ignorance we are always thinking and choosing or saying that imam this son or that son will be the imam. We should never do that. When imam selects a imam after him, imam is not looking at his son. Imam is looking 1,000 years forward. He's looking at all the imams from the progeny of the imam, Nuran ala Nur. He does not have a limited thinking like us. He's not looking at his son. He's looking at his grandson and his son and his grandson and his son again and again and again. He's looking at 1,000 years. So I would request humbly that we should not choose, pick, or think who the next imam would be. Let imam think and choose and pick who the next imam is. G. Aziz, I've just got a recommendation for that lady who asked about the noise. I don't know where she is from, but here in Canada, there are bylaws where if there is noise at unreasonable times, like 2 o'clock in the morning, like she said, you can actually complain to the authorities, the municipal council or the authorities, that this noise is at an unreasonable time. Like reasonable time could be, after 11 to maybe 4 o'clock in the morning or 5 o'clock in the morning. That is an unreasonable time to make such noises. So maybe this lady can take it up with the authorities. Just phone the municipal or whatever authority that they have, or even the police. Just a suggestion. Thank you. Do we have जी any सर, other सबको question? कंप्लेन किया, मैंने सबको कंप्लेन किया। यहाँ पे हम हमारे अपार्टमेंट के मेंटेनेंस कमेटी से किया, सबसे किया। वो लोग भी कहते हैं पुलिस को बुला लो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी तो जाहिर है फिर दुश्मनी करेंगे ना वो हमारे से। Yeah, you do what यहाँ पर you need केस, to do. यहाँ पर ऐसे केस हुए हैं ना, एक कपल को भी, और बार बार धमकी देते हैं कि आपको खत्म करा देंगे। So, like I said, my way, I mean, this is just a suggestion. You do what is good and right for you. This was just a suggestion. Thank you. मैं किसको बोलूं? नहीं, आप वो करें जो आपके लिए सही है। आप वो जी, करें जो उसका सही है। Ask Mola Baba इसलिए हम लोग to help you. खामोश बैठे हैं, Ask Mola इसलिए हम Baba लोग to ना। help you. थैंक यू सर। मौला तो हमेशा साथ है मेरे। मैं इसी दिन का तस्बीह निकालती रहती हूँ मुश्किल आसान की। Thank you. थैंक यू। Any other question? So we have one question. So friends wants to know. So when we were born, at what level were we on the clock? You just explain. Very simple. At number 12. Do we have any other question?
So I don't see any questions in the chat. In that case, thank you everybody. May Mola be with you. May Mola bless Ameen. all of us. May Mola Ameen. shower his best blessing on Ameen. us. Thank you Ameen. everybody. Ya Ali Madad. Ya Ali Mola Madad. Maula Ali Ali Madad, Madad. Mola. Maula Thank Ali you and Madad. Ya Ali Madad. या नहीं मेरे भाई Ya थैंक Ali यू Madad. की सलामत आबाद रखे आपकी Amin. खिदमत कबूल करे सेहत आमीन तंदुरुस्ती आमीन दे या अली मदद Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. يا اللي مدد يا اللي مدد شكرا سر. الحمد لله شكرا يا اللي شكرا مدد سر. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad.